हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एक्चुअली में क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, राइट। क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखिए, इसमें दो वर्ड्स है, एक क्वांटिफायर है और एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। जो क्वांटिफायर है ना, वो यूज़ होते हैं किसी ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये ओपन सेंटेंस देखिए, x प्लस 5 इक्वल टू 7 डिफाइंड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर है, ठीक है। दिस इज अ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है x प्लस 5 equal to 7 over the set of natural number is an open sentence. We cannot say that it is a statement at the moment. Why it is? Because the statement is either true or false, but we cannot say that this sentence is true or false because of this openness. Okay, so what happens? We can have there exists and for every. नहीं, ये for every, this is for every and this is there exists. Now this for every and there exists, these are the two quantifiers which are used to convert the open sentences into the statements, right? And the open sentences, when by using these quantifiers for every and there exists, this is for every and this is for there exists, these quantifiers are used to convert this open sentences into the statement, and those statements are called as quantified statements. Okay, so these are quantifiers, two quantifiers, right? This is universal quantifier, and this is existential quantifier. So there are two types of quantifiers. One is universal quantifier and the second one is existential quantifier. The sign for the universal is this one, which is for every, and the sign for there exists is this one. So you can now understand that in mathematics, in every book you will see the statement which are using either of this sign or this sign, right? So because the open sentences has to be converted into the statement, whether the statement is true or false, that is a different thing, okay? But in writing the mathematics, we always see that there are use of these type of two quantifiers for every and there exist, right? So these are the two quantifiers which are used to convert these open sentences into the statement which are called as a quantified statement. Fine. So let's see for here. So पहला यहाँ से हम बताते, there exists x plus x belongs to natural number such that x plus 5 equal to 7. Now there exists x belongs to natural number such that x plus 5 equal to 7. तो क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जिसको यहाँ पे रखेंगे तो ये 7 आ जाएगा? यस, x इक्वल टू 2 इज अ नेचुरल नंबर. सो देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टेटमेंट and the truth value is true. करेक्ट है. अगर मैं ये दूसरा बनाऊं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये भी स्टेटमेंट है.
दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट, क्योंकि हमने क्वांटिफायर यूज कर दिया है फॉर एवरी। सो फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट ये क्वांटिफायर अगर यूज हो जाते हैं तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है। अब स्टेटमेंट है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है, किस सिचुएशन में यूज किया है, उसके ऊपर उसकी ट्रूथनेस समझ में आएगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए एक्स प्लस 5 हमेशा 7 आएगा। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। So got the points? The open sentences can be converted into the statement by using the quantifiers. There are two types of quantifiers, that is the there exists and for every. Using these two quantifiers we can convert these open sentences into the statement, which are called as a quantified statement. Got the point? One more example. See, x square is greater than equal to 0 defined over set of real number. Now x square greater than equal to 0 defined over set of real number is a open sentences. Now this can be converted into the for every x belongs to real number, x square is greater than equal to 0. This is a statement. Now this is a statement and which has the truth value true, because for every x belongs to the real number, x square is always non-negative. There is no question with that. Correct है कि नहीं? ठीक है, तो फिर अब एक प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें मैं 3 सब प्रॉब्लम्स कराता हूँ, तो ये पूरा क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है इफ सेट a इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, then the truth value of then find truth value of x belongs to a such that x plus 3 equal to 10. X plus 3 equal to 10. Now find the truth value of x belongs to a such that x plus 3 equal to 10. So this x plus 3 equal to 10 only when x is 7. But 7 is not there in the set A. So therefore there is no x for which x plus 3 equal to 10 in the set A. So this is a statement, but the truth value is false. Second question. What is the truth value of, find truth value of for every x belongs to a, x plus 6 is greater than equal to 9. For every x belongs to a. See, if x is 3, 4, 5 and 6, then this is true. X plus 6 is greater than equal to 9. But for x equal to 2, this is not true. But here we have used the quantifier for every. So for every x belongs to a, this statement is false. क्वांटिफायर लग गया तो स्टेटमेंट तो हो गया, लेकिन इस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स आ जाएगी। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। और लास्ट देखते हैं, फॉर एवरी x belongs to a, x plus 2 is less than 9. Now x plus 2 less than 9. Okay. So if x is less than 7, if x is less than 7, then definitely x plus 2 will be less than 9. But here also all the numbers which belongs to the set A are less than 7, and hence we can say that this statement is a true statement. Okay. And now come to the last topic, that is the negation of quantified statement.
देखिए ओपन सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट बना दिया किसकी सहायता से, क्वांटिफायर्स की सहायता से। किस प्रकार के क्वांटिफायर्स है, दो प्रकार के, एक तो यूनिवर्सल और एक एग्जिस्टियल, फॉर एवरी एंड देयर एग्जिस्ट। अब अगर ये स्टेटमेंट बन गए हैं तो फिर इनके नेगेशन भी तो होंगे, तो अब इनके नेगेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो तो पहला यू insert not at proper place। नेगेशन बनाने के लिए पहला काम तो आपको नॉट को इंसर्ट करना ही पड़ेगा प्रॉपर प्लेस पर। उसके बाद हमको क्या करना है, रिप्लेस ऑल बाय सम एंड वाइस वर्सा। अगर कोई वर्ड ऑल है तो उसको सम से रिप्लेस करिए, सम है तो उसको ऑल से रिप्लेस करिए। तीसरा रिप्लेस फॉर एवरी बाय देयर एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। सो रिप्लेस फॉर एवरी by their exists and their exists by for every. So these are the three ways, okay, you can say that these are the three steps to make the negation of the quantified statement. That's very simple. So let's see the first problem. Find negation of all natural numbers are integers. Find negation of all natural numbers are integers. See, negation क्या हो जाएगा इसका, all is replaced by some natural number are, negation बनाना है, all word has been replaced by this sum, but we have to insert the not at the proper place. So the some natural numbers are not integers. Fine. So in that way we can find the negation of the given quantified statement. Let's see two more examples. Find negation of for every n belongs to n plus 7 is greater than 8. तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेशन निकालना है। फॉर एवरी है तो देयर एग्जिस्ट आ जाएगा, फॉर एवरी है तो वहाँ क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 7। अब इसका नॉट कैसे बना है, n प्लस 7 ग्रेटर देन 8 है तो इसका नॉट हो जाएगा n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि ग्रेटर देन का जो नॉट है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन का जो नॉट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन इक्वल टू का जो नॉट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that n plus 4 is greater than 9. n plus 4 is greater than 9. There exists n belongs to natural number such that n plus 4 is greater than 9. So answer, we have to convert this quantified statement into the negation. Okay, negation of this quantified statement, there exists has to be replaced by for every n belongs to n plus 4 greater than का negation less than equal to 9. So this is the negation of this quantified statement. Okay, so here we have finished the quantifier and the quantified statement, that is how to convert the open sentences into the statements. In the very beginning, first lecture of the logic, we have discussed about the sentences statement, and also we discuss about the open sentences. And in that lecture I told you that the open sentences can be converted into the statement, and how we will see in the
somewhere. So this is all about this lecture, where we have seen how open sentences can be converted into the statements. So there are quantifiers. By using quantifiers, we can convert the open sentences into the statement, which are called the quantified statements. And of course, the statement is either true or false, so we can find out the truth values of quantified statement, and as it is the statement, therefore we can also find out the negation of this quantified statement. I hope that you people have understand these concepts clearly. Okay, fine.